Hello guys, how are you? Hope you are doing well. So I hope I am live. Can you type in the chat box I am live or not? Okay. Are you people able to hear me or not? Can you type in the chat box? Are you people able to hear me or not? Type in the chat box. Can I type in the chat box? Okay. So guys, today, as the video topic suggests, today we're going to talk about the electoral bond. Okay. So we're going to learn about the electoral bond, but I don't want this session to be just one-sided session. I want this session to be interactive one. I want you to participate as well. I want you to ask me questions regarding your preparation regarding the electoral bond, so that we can have a very interactive session down the way. Okay. Now, before starting, I want you to just tell me whether am I audible or not correctly, as sometimes there might be some kind of technical glitches that I am not aware of. So from your side, if you are able to hear me, do let me know in the comment box. If you are able to hear me, kindly type chat box. You are able to hear me or not? Yeah, kindly type in the chat box. You are able to hear. Then we're going to start. Okay. So can I type in the chat box if you are able to hear me? Please, guys, if you are, I think you are able to hear me. Okay. Right. Oh, that's great, Priyansh. That's great. You were able to hear me. Absolutely great. So, guys, today we're going to talk about a very important topic regarding the CLAT PG preparation, that is electoral bond. Now, why it's important, I'm going to tell you. And yeah, so why it is important for you for CLAT PG preparation, that I'm going to talk to you. Side by side, I am going to take your questions, okay, regarding your preparation, regarding your CLAT PG. Anything that you want to ask me, any problem that you're facing regarding the CLAT PG, just feel free to ask me. Okay, I'm going to take all your queries at the end also. And regarding the electoral bond, whether you're able to understand whatever I am communicating, उसके बारे में भी आप सब मुझसे सवाल पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अच्छा, चलो हम लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे. आज इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे. बट सबसे पहले मैं बता चुका हूं, दिस सेशन वुड बी एन इंटरैक्टिव वन. सो फॉर यू, आई वांट I am going to ask some questions to you, and definitely just try to communicate, try to answer as per your understanding. Don't try to be correct, don't try to be I have to be correct whatever I'm saying. Okay, just try to answer as per your understanding, because that would be the only way to basically have this kind of judgment to be understood in a better way. Okay, चलो, तो आज हम लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे. और इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, आई होप इलेक्ट्रल बॉन्ड के सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को पता है, ठीक है, कि व्हाट दिस बॉन्ड इज ऑल अबाउट. ये बॉन्ड क्या है, ठीक है. ये बॉन्ड के बारे में शायद कुछ सालों से दिस बॉन्ड इशू इज गोइंग ऑन इन द न्यूज, but nobody is really aware of what's going on until Supreme Court on 15th February given a very landmark judgment in relation to this. Why it's a great judgment? Because it is in the support of democracy. The electoral bonds is a tool that was used by various political parties that are currently in the government, जो अभी government में है, वो electoral bond को use करते थे for various purposes that we will discuss in this session also, okay, in the coming session also. और electoral bond के बारे में शायद आप लोग भी कुछ पढ़े हो. Kindly give me or share your just tell me whether you have heard about electoral bond or not. Yes or no? इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में ऐसा तो नहीं मैं मेरे से पहली बार सुन रहे हो. आज कुछ तो सुने होंगे, न्यूज़पेपर में हो या आपके न्यूज़पेपर देखे होंगे या यूट्यूब में सुने होंगे, whatever that. I hope you might have heard something about electoral bond, right guys? Can you type in the chat box whether you've heard something about electoral bond or not? Type in the chat box. Type in the chat box whether you have heard something about electoral bond.
something about electoral bond? कुछ तो सुने होंगे. What have you heard? What have you heard regarding the electoral bond? क्या सुने हो electoral bond? ठीक है. Now, electoral bond, as I told you, is a tool via which the financial donation, okay, the donation, anonymous donation is being done to a political party. Sir, anonymous donation मतलब जो डोनेट करते हैं उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता चलता है? नहीं जी. There is no information that will be communicated if it is done by electoral bond. सर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड अगर मैं खरीदता हूं एंड आई विल गिव इट टू पॉलिटिकल पार्टी whom I am going to support, तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता चलेगा that I have given that particular donation. No, सर हाउ इज इट पॉसिबल? बॉन्ड अगर खरीदेंगे कुछ तो लिखा होगा बॉन्ड के ऊपर. नहीं जी, नथिंग इज रिटन. ठीक है, इट्स अ बॉन्ड, इट्स अ बियरर बॉन्ड. बियरर बॉन्ड में नथिंग इज रिटन रिगार्डिंग द डिटेल्स एज सच. जिसके पास ये बॉन्ड रहता है, he or she is the owner of the bond. तो ये तो बॉन्ड के बारे में हुआ, एंड आई एम नॉट गोइंग टू गेट टू मच अबाउट द डिटेल्स ऑफ द बॉन्ड टुडे, क्योंकि यूट्यूब में और बाकी जो इंफॉर्मेशन, बाकी जो ब्लॉग बॉन्ड के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है. ठीक है, बॉन्ड इसका है, इस रुपए का बॉन्ड आता है, 1 करोड़ के ऊपर बॉन्ड, 94% बॉन्ड खरीदा गया है. ऑल दो स्टफ्स have been written and communicated in various platforms, and I am not going to get into too much detail about it. Otherwise, it's not relevant फॉर क्लैट पीजी पर्पस, क्योंकि क्लैट पीजी के लिए हम लोगों को जो पढ़ना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो पढ़ना है, यहाँ पर लॉ के बारे में जानना है. हाउ मेनी ऑफ यू विल एग्री विथ मी कि लॉ के बारे में सर जानना है, लॉ के बारे में समझना है, जो क्लैट पीजी में बहुत रेलिवेंट है? यस और नो गाइस, यस और नो? काइंडली टाइप इन द चैट बॉक्स इन दिस केस, राइट? सो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में हम लोग जानेंगे. फरवरी महीने में बेसिकली इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोनाउंस्ड जजमेंट. या अश्मित, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट दैट इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ जजमेंट, एंड दिस जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. ओके, शायद 2025 क्लैट पीजी जो 2024 में होने वाला है, which is for that purpose this particular bond case is very important. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बॉन्ड केस. और इस बॉन्ड केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें फंडामेंटल राइट दैट यू गोइंग टू लर्न अबाउट इट. इसमें हम लोग कंपनी लॉ के बारे में डिटेल्स भी देखेंगे. इसमें हम लोग सीखेंगे भी जजमेंट को कैसे देखा जाता है. all those aspects we are going to learn down the time. Okay, now let me start with what has happened in this particular bond case में क्या हुआ था. February 15 फरवरी सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया regarding this particular judgment that electoral bond scheme which was being carried out in relation to electoral funding was unconstitutional in nature because it is violating our Article 14 and Article 19. Okay, how we are going to get into too much detail about it, उसके बारे में हम लोग जानेंगे. Now, उससे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में आप लोगों को क्या पता है? अश्मित इज सेइंग सर यस सर, एसबीआई इलेक्ट्रल बॉन्ड इज देयर. ठीक है, अनुष्का इज सेइंग यस. ठीक है, आप ये जजमेंट पढ़े भी हो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला? हैव यू रेड दिस जजमेंट? यस और नो? हैव यू रेड दिस जजमेंट और यू हैवंट? अभी तक ये जजमेंट पढ़े नहीं हो? सर पढ़ने वाला हूं सर, आपसे पढ़ रहा हूं. व्हाट इज दैट? हैव यू रेड समथिंग अबाउट दिस जजमेंट? हैव यू रेड समथिंग अबाउट दिस जजमेंट? Have you read? Yes or no? Type in the chat box, or you are going to read about the judgment. You are going to read about this judgment. Type in the chat box. Type in the chat box. Now, guys, the electoral bond जो aspect है, ठीक है, not completely. Ashmit is saying not completely. Okay. Abhishek, if you are hearing me, Priyansha, if you are hearing me, are you basically, have you read this judgment or you haven't? So I'm going to share the voice stream with you.
and I'm going to explain the judgment, and also I'm going to share the judgment with you also. ठीक है, मैं आप लोगों के साथ जजमेंट भी शेयर करूंगा, मैं दिखाऊंगा जजमेंट में क्या क्या है. ओके, सो कुछ जो पार्टे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ क्लैट पीजी पर्पस के लिए कुछ जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसमें से एक जजमेंट ये है आपके इलेक्ट्रल बॉन्ड. There is another judgment that has been recently pronounced, that is Sita Soren. That is also a very important judgment. I hope many of you are already going through that, or if you haven't, please do go through that. ठीक है, सीता सोरेन जजमेंट. बट इस जजमेंट में किस में क्या है इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे. Now, when a judgment is very important, you have to get into details about it. ठीक है, मैं थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि जजमेंट के बारे में बहुत लोगों का क्लैरिटी नहीं होता है. दे आर ट्राइंग टू रीड इट सुपरफिशियली, व्हिच इज नॉट द केस इन सम केसेस. ठीक है, कुछ मामलों में आप सुपरफिशियली पढ़ोगे, बहुत अच्छी चीज है, बट कुछ केसेस में आपको सुपरफिशियली नहीं, यू हैव टू रीड इट फ्रॉम द very zero to in depth. The reason being, those cases are very important. You cannot leave those cases because there's a high chance questions will be asked from these cases. And Association of for Democratic Reforms is one of those cases. मतलब electoral bond वाला case is one of those cases which you can't really sideline. You have to read it. ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस मैं इसीलिए एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूं कि आप इसको बाकी जजमेंट की तरह मत देखना, और इस जजमेंट को आप अच्छे से करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, द रीजन इज वेरी सिंपल, द इंपॉर्टेंस ऑफ द जजमेंट. ठीक है, अच्छा, मैं थोड़ा अभी स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ. मैं अभी जजमेंट ही खोल रहा था. ठीक है, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विथ यू, एंड आई एम गोइंग टू बेसिकली understand all the aspects of this judgment one at a time. Okay, now guys, I hope the screen is visible to all of you. एक बार मुझे बताना whether the screen is visible to all of you or not, please. Whether it's visible to all of you or not, kindly एक बार tell me. Okay, please do tell me that the screen is visible to you or not. This judgment is written by D.Y. Chandrachud, and this judgment is very interesting one to read actually. Type in the chat box. It is type in the chat box, please. Type in the chat box. Okay. Okay, guys. Okay. Now, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द इलेक्ट्रल बॉन्ड. ओके, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, व्हाट इज इलेक्ट्रल बॉन्ड. इलेक्ट्रल बॉन्ड is a tool via which the funding to electoral party is done. I have just already stated that. Okay. Well, sir, इससे बड़ी बात क्या है? Why it's in the news? Why it is so huge thing that we have to read a case about? इसके बारे में हम लोग क्यों केस पढ़ेंगे? ठीक है. Now, the reason is very simple. Electoral bond or donation to the political party via which our basically election or all the democracy, all the things are getting run. In this aspect, the funding to election is very important. ठीक है, क्योंकि बिना फंडिंग का एक पॉलिटिकल पार्टी के पास there are hardly few ways to get the money other than the funding. Okay, that's why funding becomes very, very important. Now, before 2017, what it used to happen, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं. Before 2017, electoral funding, electoral bond scheme के पहले क्या होता था? It was done under the table, मतलब कैश के माध्यम से बेसिकली फंडिंग दिया जाता था, and nobody knows how much funding it is to be done. किससे कौन पैसा लिया, कितना पैसा लिया, nobody used to know about it. Now, to basically change the system of cash donation to political party, electoral bond scheme was introduced.
नाउ इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम में द डोनेशन इज गोइंग टू बी डन बाय द इलेक्ट्रल बॉन्ड्स. ओके, नाउ डोनेशन विल बी डन बाय द इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इज फाइन इनफ. सर पहले कैश से होता था, अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड से होता है. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज वेरी सिंपल. डिफरेंस इज दैट now they have to follow a certain procedure to donate if anybody wants to donate. Okay, now what they have to basically get a bond, and that bond is going to be issued by one respective branch, that is SBI branch, and then that particular bond, after being issued by the SBI, you can basically submit to the political party and they can encash it within the 15 days. ये बेसिक एक प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर आपको कहीं से भी मिल जाएगा. And I told you I don't want to get into too much about this procedure. I'll talk about more about law, which is more important for your CLAT PG purpose. Now ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, इसमें सर ये तो समझ में आ गया आप जो बोल रहे हो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में एक प्रोसेस रहता है जिसके माध्यम से पैसा कोई दे सकता है. अच्छी बात है. बट अब could you please tell me सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? Where is the problem? यहाँ पर तो मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं देख रहा था. पहले कैश से हो रहा था, अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड से हो रहा है. Isn't it now it's bit fairer? Now it is done via an banking system, so there is a track record who is giving the money to whom and everything that can be done. Not really. Okay, and that's where the whole ball game is going to be understood in relation to this case. ठीक है, तो अभी हम लोग इस पर्टिकुलर केस के बारे में लॉ को देखेंगे, लॉ को समझेंगे, सो दैट यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि लॉ में क्या चेंजेस हुआ है, एंड दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रल बॉन्ड इज सो मच क्रूशियल टू बी अंडरस्टूड. ठीक है, so far whatever I have communicated, is everything understood to all of you? So far whatever I have communicated, everything is understood from my side? All of you kindly type yes if you have understood. Type yes if you have understood. Kindly type yes. Kindly type yes. Okay, now if you understand this particular part, ठीक है, हम लोग फिनेंस एक्ट के बारे में जानेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ. सर प्रॉब्लम समझ में आया, लॉ बता दीजिए आप. व्हाट इज द लॉ अबाउट, व्हाट इज द प्रॉब्लम अबाउट द लॉ दैट इज so problematic here? Okay, now one very important aspect while reading a judgment is the table of content. ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट में हम लोग जब जानेंगे, ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे बैकग्राउंड और कॉर्पोरेट कॉन्ट्रीब्यूशंस. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं और इसको आगे जाके देखते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स आर देयर इन रिलेशन टू दिस. नाउ इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल फंडिंग अगर होता है, whatever has been done, it is governed by 3 basic laws. Electoral funding or donation to any political party, it's basically done via 3 laws. अभी मैं लॉ के अंदर जा रहा हूं, you will get to understand what it is all about. 3 लॉ के बारे में बात करूंगा मैं. Basically, so first and foremost thing that I'm going to talk about, एक second, yeah. Three laws are related to the electoral funding system. Okay, 3 laws. कौन से लॉ है? एक है कंपनीज एक्ट, जहां पर कॉर्पोरेट फंडिंग देते हैं वाया कंपनीज एक्ट. दूसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपी एक्ट. ओके, एंड थर्ड आता है आपके द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, दैट इज आईटी एक्ट. ठीक है, these 3 acts are basically in relation to इलेक्ट्रल फंडिंग. एंड ये स्ट्रक्चर में अगर आपको कुछ जानना है, ये तीनों लॉ के बारे में जानना है. ठीक है, उसके कुछ पर्टिकुलर सेक्शन है, जैसे कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन है? सेक्शन 182 दैट यू हैव टू लर्न. ओके, आरपी एक्ट के सेक्शन 29 टू बी डन, आईटी एक्ट के सेक्शन 13 टू बी डन. ठीक है, नाउ ये तीनों प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अगर आपके पास बेयर एक्ट है
So you can open it and you can get to know. Okay. Now, सबसे important यहाँ पर Companies Act, though Representation of People's Act is important because it's related to election, इसमें कोई doubt नहीं है. But Companies Act 182 is very important because it's related to donation. Okay, companies donation, mainly the corporate donation. क्योंकि आप अगर एक individual donation की बात करते हो, individual donation is not as per मतलब not that higher in quantity. Okay, बट कंपनीज एक्ट में जो कॉर्पोरेट डोनेट करते हैं, ठीक है, उसके नंबर बहुत हाई है. ना आप बोलोगे सर कॉर्पोरेशंस के क्या जरूरत पड़ रहा है, व्हाई दे नीड टू डोनेट द मनी टू द पॉलिटिकल पार्टीज. ओके, they don't need to because they are running business, they are serving, they are profit making. Why the hell they need to give to political party or the ruling party or the opposition party? उनको पैसा देने की क्या जरूरत है? You might be thinking, you might be asking. Now इस मामले में आपको बताता हूं, companies or the corporate contributions are the very important channel for the any ruling party or opposition party or any political party to get the funding from. Now why? अभी मैं आपको समझाता हूं. Now, and now here comes the very controversial part I am getting into. You might be thinking, sir, whatever you are saying might be controversial nature. Yes, I am saying to make you understand क्योंकि मेरा main motive है आपको समझाना, ठीक है. Now there are so many industrial companies, okay, they are making major pollutions, water pollution, air pollution. Okay, I am not naming it right now, but there are many industries who are doing it. There are many companies who are doing it directly and indirectly. So in that case, to just continue with their manufacturing unit, which actually causing air pollution, water pollution, or n number of pollution, government knows it, you know it, I know it, but they have to run and they're willing to run. How they're going to run? When they are going to pay to the ruling party or government. That's how they run. It's a backdoor entry. Now you might be thinking, sir, it's wrong. No, it's wrong. But that's what is being done via this system. That is to be understood. Okay. Now, आप अगर समझोगे, कुछ दिन पहले की बात करता हूं, and I'm not related to any political party, you will get to understand this thing to make you understand the most important thing for me. Now, suppose Patanjali. Recently, you might have heard the name of Patanjali. How many of you heard the name of Patanjali? पतंजलि के बारे में रिसेंटली केस चल रहा है, ठीक है, एंड दे हैव मेड ए पब्लिक अपॉलॉजी टू इट, टू द मास, व्हाटएवर दे हैव डन रिगार्डिंग ड्यूरिंग द कोविड, के उनके जो प्रोडक्ट है, उनके जो चीजें हैं, दे आर द बेस्ट, वो बाकी जो वैक्सीन है दैट्स नॉट नीडेड, लॉट ऑफ थिंग्स, एंड गवर्नमेंट, ओके, the department of government has basically cleared it at that moment. Now Supreme Court is basically wrapping the Patanjali and this government, both the government, यार आप क्यों किए थे ऐसे? Okay, now are you understanding there is a nexus between the corporations and the ruling party? There might be a nexus. Okay, I hope you are understanding. I'll type yes if you are understanding or not. If you are understanding or not, type yes. Type yes. Are you understanding? Are you understanding, guys? So there is a nexus between this thing. When there is a nexus between this thing, then there is a problem. So पतंजलि के केस में आप देखो, अभी भी न्यूज में आ रहा था, हर दिन न्यूज में आता, न्यूज़पेपर में, you will get to see that. अगर नहीं आ रहा है आप देखो पतंजलि के बारे में. कुछ दिन पहले मैगी, आई होप यू रिमेंबर, आप हॉस्टल में रहते हो, कॉलेज में रहते हो, आई होप यू आर अवेयर अबाउट द मैगी. सो few years back there is a problem with the Maggi. The masala that is being used in the Maggi that has some kind of cancerous or carcinogenic element, right? So that was addressed by the public, but they had to run, and there is some kind of system going on. And so what is the system you are talking about? Now the system that I'm talking about, that is the quid pro quo system that is going on. Okay, quid pro quo system that is going on. Okay, quid pro quo मतलब क्या है? I hope as a law student you might know this Latin maxim, the meaning of this Latin maxim. Quid pro quo मतलब कुछ लेना कुछ देना. Okay, so here the companies, they are giving something in via cash, via electoral bond, via various mechanisms, and they are taking it. Now to make you understand this thing, I have to tell you. And that's what is going on. And you people are not blind. You people also understand this thing very clearly. Okay.
And it is not only with this current government, it has happened with the previous government also, because there are so many scams, this 2G spectrum craze, and lot of things that has happened. It's related to some or other ways a quid pro quo system that is going on. Okay, that's why Companies Act are very very important in relation to this case. ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया इलेक्ट्रल फंडिंग के रिलेशन में तीन लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है कंपनीज एक्ट सेक्शन 182, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट सेक्शन 29 एंड सेक्शन 13 ऑफ आईटी एक्ट. ठीक है, ये मुद्दा तीनों जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनीज एक्ट सेक्शन 182. आई होप यू आर क्लियर सो फार व्हाटएवर आई एम communicating right now. Can you type yes if you have any query? कुछ क्वेरी है जी, कुछ क्वेरी है बताओ. सो फार व्हाटएवर आई एम कम्युनिकेटिंग, कुछ क्वेरी है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Can you type yes? Can you type yes if you are okay, if you are understanding what I'm communicating? Can you type yes? Now coming to this part, सर इलेक्ट्रल बॉन्ड हुआ, तीन लॉज है, तीन लॉज में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या है? नाउ अगर आप बेसिकली ये देखोगे, ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड, द मेन पर्पस ऑफ द इलेक्ट्रल बॉन्ड व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट and the then minister Arun Jaitley stated, it is to curb the black money. Okay, इसका मेन फंडा यही था कि इसको ब्लैक मनी कर्व करने के लिए लेके आया जा रहा है, टू कर्ब ब्लैक मनी. Okay, ये मेन फंडा है. नाउ as it was the main focus, but has it happened? Not really. You will get to see even up jab SBI recently issued the all the once again, yeah. SBI recently issued all the details of the people and the corporations and the political parties they have got it. There are 94% people who have 1 crore के ऊपर वाला bond खरीदा हुआ है. Okay, and there are ruling party, the BJP, they have got the basically largest amount via electoral bonds. Then there is Congress, TMCP, all those different political parties are there. Okay, and though now one thing is there are certain mechanisms that is being followed via which we are able to know who is doing what and how many things have been done, but only the intervention of Supreme Court has enabled this thing to do. सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम लोग जान पाए, अदरवाइज ये जो सिस्टम क्रिएट किया गया था इससे नहीं पता चलता, क्योंकि आप लोगों को अभी पता चलेगा व्हाई. नाउ सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल गेट टू नो इज दैट it is not the curving black money that is serving the purpose. ये भी आप लोगों को पता चलेगा, एंड आपको शायद कुछ हद तक पता चल भी चुका है कि ये ब्लैक मनी कर्व करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है. इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग. ठीक है, इट इज बोलने वाले कर्विंग द ब्लैक मनी, बट एक्चुअली इट्स नॉट. Okay, now having said all those things, ठीक है, थोड़ा लॉ में जो पार्ट है कंपनीज एक्ट में अगर आप देखोगे सेक्शन 182 में आपके प्रीवियस 2017 फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट, ओके, देयर वर रेगुलेशंस कि not all corporations or companies can make donation, only the profit making companies they can only make donations. Okay, and also simultaneously they have to only have a certain cap limit, मतलब 7.5% of 3 preceding year profit, उतना ही कैप है आपको बेसिकली डोनेशन देने के लिए, इलेक्ट्रल फंडिंग देने के लिए. दैट वाज द कैप. And even you have to maintain the data and every aspects to it, in the accounts in the finance book आपको maintain करना पड़ता था. ठीक है, in that is the Companies Act that was there. In relation to other representatives of people act में भी the detailed descriptions regarding the donations and each and every aspect that was to be given वो भी लिखा हुआ था. And IT Act में भी detailed disclosure of the money trail and every aspect that is to be given, ye bhi, that was also very important, that part of the law that was given to it. But 2017 Finance Act totally changed it. 2017 Finance Act changed the all three things together. It said now agar aap 182 dekhoge, abhi to probably the
whatever the before, I don't know that you have the recent company law Bear Act with you or not. So 2017 Finance Act के बाद अभी currently जो situation है, which is कि any company loss making, profit making, they can do unlimited funding. So there is no cap to it, or any profit or loss making company can do funding. Okay, that's one very important aspect that has changed after 2017 Finance Act. 2017 Finance Act और भी एक अमेंडमेंट किया रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स एक्ट में, जिसमें बोला गया कि ऐसे इसको डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग any money or anything, any political party who are gaining via electoral bond. ठीक है. And third part is IT Act में भी same चीज है, only the non disclosure is one of the primary facet to all the aspects. ठीक है. So ये जो तीन सिस्टम था कंपनी लॉ के, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के एंड आपके आईटी एक्ट के, ठीक है, जिसमें डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. दैट डिस्क्लोजर पार्ट was basically substituted via electoral bond after 2017 finance act. 2017 finance act basically उस डिस्क्लोजर को हटा के ये बोला कि डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं, इट्स अ टोटल नॉन डिस्क्लोजर. नाउ आर यू एबल टू अंडरस्टैंड where the problem is lying? Are you people able to understand कि problem कहां पर है? कि जो डिस्क्लोज एक बहुत इंपॉर्टेंट फेसेट था, अगर कोई फंडिंग जा रहा है उस मामले में, आप ऑटोमेटिकली बोल रहे हो कि डिस्क्लोज करना आपको करना जरूरी नहीं है. इट्स नाउ ऑप्शनल ऑन योर पार्ट टू डिस्क्लोज द एस्पेक्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ? Are you understand the difference, the disclosure to non-disclosure? How the electoral funding system and mechanism has changed throughout the time from the disclosure to non-disclosure, ठीक है, via Finance Act 2017, via Finance Act 2017, 2017 Finance Act. Are you able to understand this part, guys? Can you type yes if you are able to understand? Can you type yes? Are you able to understand this part? Are you guys able to understand this part? Can you type yes? Can you type yes if you are able to understand? Achha. Now this disclosure to non-disclosure, I hope you are able to understand what problem is arising now. The problem is that when it is disclosed, then we know everything about the funding and the aspect of electoral anonymous funding and all the aspects. Now if it's not disclosed, then the problem of information is kept hidden, and when there is an information kept hidden, then there is a right which is getting violated. Which right is getting violated, guys? If any information or essential information of your, for your choice, for your important choice to make, an important information is kept hidden from you, तब आपका कौन सा राइट ब्रीच हो रहा है यहाँ पर? Can anyone tell me? Can anyone tell me which right is getting breached here? Which right is getting breached here, guys? Which right is getting breached here? Can anyone tell me? अगर आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपा के रख दिया जाता है, जो इंफॉर्मेशन के चलते शायद आप एक दूसरे पार्टी को वोट दे सकते हो, तो इससे आपका कौन सा राइट ब्रीच हो रहा है? कोई भी राइट ब्रीच हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है? ऐसा ना वो लोग they can hide information as per their wish. Any information is getting breached? Any information is getting breached here, guys? Any right is getting breached? Any right is getting breached? Any right is getting breached, guys? बताओ.
Asmit is saying right to information, right? Absolutely, absolutely correct, Asmit. Is here the one very important aspect, right to information. But right to information तो बताए Asmit आप, where right to information is given. Are there any right to information given in any of our fundamental right? हम लोगों के फंडामेंटल राइट में राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कहीं पर भी? राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कहीं पर भी? है? दिया हुआ है राइट टू इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी? As a fundamental right, it is written somewhere. आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में क्या एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है देयर इज अ राइट टू इंफॉर्मेशन? Is there any explicit mention of article 19? In article 19 then we have right to information. Is there any explicit or it is implied? It is explicit or it is implied? And if it's implied, how we are talking about this information, right to information that we are talking about? टफ सवाल है ना, सवाल टफ है, and that's a very important thing. ठीक है सर, राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 19(1) में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, but we are talking about our right to information has been breached, ठीक है, because there are certain kind of information which is important for us to make a better choice during election, which is being kept hidden from us, and that's why you are not able to make right decisions to whom to vote, whom not to vote, right? So in this case, the one very important aspect that you need to know, okay, one very important aspect that you need to know, this right to information is basically not written in article 19(1)(a). Article 19(1)(a), it basically talks about the freedom of speech and expression, which you very well understand. Yes sir, हाँ इसमें तो freedom of speech and expression है. Now the most important part freedom of speech and expression का अगर आप बात करोगे, how can you express yourself if you don't know? How can you express yourself freely if you don't know proper information? How you can express yourself to the fullest if you don't know the full information? Are you able to understand my question where I am hinting at, guys? Are you able to understand कि सर आपके बात में कहीं कहीं समझ पा रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सप्रेस में कैसे करूं अगर मेरे पास अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर मेरे पास इलेक्ट्रल फंडिंग का और इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, विल आई बी ब्लाइंड while casting my vote? Will I be blind while casting my vote? Because that information is kept hidden. Suppose मैं मान रहा हूं, देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज आप 18 साल के ऊपर हो और आप वोट देने गए हो, आपके वोट चल रहा है या देने वाले हो या दे चुके, ओके, नाउ थिंक अबाउट इट, यू आर गोइंग टू कास्ट योर वोट, यू थिंक यू आर गोइंग टू कास्ट योर वोट टू बीजेपी, बहुत अच्छी बात है, and I really support that party, आप जाके बीजेपी को वोट देने वाले. Now as this particular information is now publicly available, when you see electoral bond के माध्यम से सबसे ज्यादा फंडिंग भाजपा को मिला है and भाजपा is trying to keep it hidden, आपका दिमाग चेंज हो सकता है. Is there a possibility? Though you might be a die-hard BJP fan, there is no problem in it, but there is a situation that might change in your mind. इस इंफॉर्मेशन के बाद शायद आप सोच रहे हो कि नहीं सर, शायद आई एम गोइंग टू कास्ट वोट टू अनदर पार्टी, I don't want to vote BJP now because of this particular information which I am now getting it. Can it be done? Can it be possible, guys? Can it be possible? Try to understand how the freedom of speech and expression giving birth to freedom of information, how freedom of expression is giving birth to right to information, that I am talking about, and it's a very important and interesting part that I'm talking.
आप बोलोगे सर 4 जजमेंट दिया गया था, जजमेंट से आ गया। तो देखो जजमेंट तो दिया गया था, व्हाट जज हैज बीन कम्युनिकेटिंग वाया दैट पर्टिकुलर जजमेंट आई एम टॉकिंग टू यू। एक्सप्रेशन कैन ओनली बी फुल वाया इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो हियर राइट टू इंफॉर्मेशन बेसिकली curtailed. Okay, okay. Right to information is being curtailed here. Now, next part. If right to information is being curtailed, then this electoral bond scheme might be violative of Article 19, guys. Yes or no? If it is violative of Article, if it is curtailing the right to information, it is violative of Article 19(1)(a). But unless and until it is not protected by 19(2). What is 19(2), guys? इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम सर कहीं ना कहीं राइट टू इंफॉर्मेशन को ब्रीच कर रहा है, विच आई एम अंडरस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया। बट सर आर्टिकल 19(1) को अगर कोई भी चीज ब्रीच कर रहा है तो उसको देखने के लिए मुझे 19(2) का एक बार रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन देखना बहुत जरूरी है। ये सुन नो, ये सुन नो गाइस, ये सुन नो। बिना 19(2) देख के मैं नहीं बता सकता ये 19(1)(a) से ब्रीच कर रहा है। यस, तो एनी पर्टिकुलर सिस्टम वॉट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट that has to be checked with the article 19(2). So here electoral bond system or electoral bond scheme that has to be checked under the umbrella of article 19(2). आर्टिकल 19(2) व्हाट डज इट टॉक अबाउट गाइस? आर्टिकल 19(2) में क्या क्या चीज लिखा हुआ है? आप आपके बेरेट खोलो, जब जब जजमेंट पढ़ रहे हो तो ये सारी चीज आपको देखना पड़ेगा। दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके, वेरी यूजफुल फॉर यू। तो आर्टिकल 19(2) में क्या है? आर्टिकल 19(2) में यू माइट फाइंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस आर देयर गाइस। हाउ मेनी एक्सेप्शंस आर रिटन देयर? हाउ मेनी एक्सेप्शंस आर देयर? डिफेमेशन, मोरालिटी, क्या क्या है बताओ? टेल मी इन द चैट बॉक्स, टेल मी इन द चैट बॉक्स। आपका रिवीजन भी हो रहा है इससे, आपका रिवीजन भी हो रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। गो ओपन इट एंड शेयर विद मी, शेयर विद मी, शेयर विद मी इन द चैट बॉक्स। What are the options given in the article 19(2)? यहां पर इलेक्ट्रल बॉन्ड सिस्टम बनाने का एक ही मकसद है, टू कर्ब द ब्लैक मनी। 8 exceptions there अस्मित, राइट? अस्मित, अगर आप 8 exceptions यहां पर लिखोगे दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल, अगर आप लिख पाओगे चैट बॉक्स में क्या क्या है, what are the exceptions are there, type it out, what are the exceptions are there, what are the exceptions are there? That's a very important aspect that I'm talking about right now, very important aspect, very very important aspect that you talk about. So the exceptions that has been written, is there one of the exception written as curbing the black money? है वहां पर curbing the black money is option, this exception found in article 19(2)? आर्टिकल 19(2) में या curbing the black money मिल रहा है हम लोगों को? आर्टिकल 19(2) में curbing the black money मिल रहा है? हेड स्पीच है, कोर्ट है, यस यस यस, राइट इट आउट। बहुत बढ़िया श्वेत, यस। But my main task is, I am telling you, curbing the black money is to be found in article 19(2).
आर्टिकल 19(2) में कार्विंग द ब्लैक मनी है, क्योंकि अरुण जेटली जी ने तो यही बताया था कि ब्लैक मनी कार्व करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड सिस्टम लेके आ रहे थे, क्योंकि 2017 फाइनेंस एक्ट के पहले जितने भी पैसे का लेन देन और फंडिंग का चल रहा था, इट वाज डन वाया कैश. It is because of the electoral bond system, everything will be done via white system and it will curb the black money. That was the intention. अब मानना यह है कि ब्लैक मनी जो चीज है, कर्विंग द ब्लैक मनी, इट इज फाउंड इन आर्टिकल 92 बिकॉज इलेक्ट्रल बॉन्ड मैकेनिज्म कहीं ना कहीं हम लोग का राइट टू इंफॉर्मेशन तो ब्रीच कर रहा है बाय कीपिंग मोस्ट इन प्रेशियस इंफॉर्मेशन हिडन फ्रॉम अस. और कोई भी चीज अगर आर्टिकल 19(1)(a) को इफेक्ट कर रहा है तो उसको 19(2) में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंदर आ रहा है या नहीं, दैट हैज टू बी चेक्ड. बहुत बढ़िया. एंड आर्टिकल 19(2) में कार्विंग द ब्लैक मनी इज नॉट फाउंड. आर यू पीपल एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई द लॉ, हाउ आई एम अप्लाइंग द लॉ? आर यू पीपल एबल टू अंडरस्टैंड? Are you people able to understand how am I applying the law? समझ पा रहे हो? वॉट एवर आई एम कम्युनिकेटिंग समझ पा रहे हो? अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है जी? बताओ, ये सर नो, ये सर नो. ये सर नो. Now, if the carving of black money is not found in Article 19, सर राइट टू इंफॉर्मेशन तो ब्रीच हो रहा है हम लोगों का. There is a clear cut breach in article. There is a breach of Article 19(1)(a), right to information, because there is no carving of black money in Article 19(2). You might say different things, but court here in this case, the court reasoning is very simple. Okay, carving the black money is not found. Court also said that there might be some public interest that might be attached to it. ठीक है, हम लोग carving the black money को public interest के नाम पे दे सकते हैं या नहीं, बट कोर्ट ने ये बोला कि वो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यूज कर सकते हैं. नॉट इन दिस parlance we can use it. So we can't really say carving black money is of public interest here. Okay, not really. So hence here article 19(1)(a) breach is very much visible. राइट टू इंफॉर्मेशन तो ब्रीच हो रहा है जी. अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, सर राइट टू इंफॉर्मेशन तो ब्रीच हो रहा है, बट राइट टू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन हम लोग का कितना है? मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन तो है, बट जो इंफॉर्मेशन छुपाया जा रहा है वोटिंग देने के टाइम, वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है, उसका कितना जरूरत है आपके लाइफ में. ठीक है, एंड हाउ फार दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इन दिस केस. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ ए वोटर regarding their all the person or the political parties who are running the elections, उनके बैकग्राउंड डेटा, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, उनके एंटीसीडेंट्स, ऑल दोस थिंग्स we have the right to know. And this was held in the case of ADR, यूनियन ऑफ इंडिया. वो भी अलग केस था एक, बेसिकली उस केस में ये हेल्ड हुआ था. और आप शायद आज जितने भी कंटेस्टेंट्स इलेक्शन में जा रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होता है तो यू गेट टू नो ये पार्टी, इसका कितना एसेट है, इसका कितना आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं. तो देयर आर मैक्सिमम पार्टीज आर रिलेटेड टू क्रिमिनल, मतलब दे हैव सर्टेन पेंडिंग केसेस और समथिंग, वो होता ही है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट now you have the right to information about the contestants who are contesting the elections, right?
And this is now changed to the next part in relation to कि अभी हम लोग एक not only we are talking about contestants, we are talking about a political party. Political party as such means political party means हम लोग यहाँ पर एक political party की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, बट एक political party के बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. And why that is so important, you'll get to understand when I'm going to communicate this thing. Why it is so important? The reason is आपके आसपास शायद बहुत लोग होंगे, they might not even know the contestants or even the name of the contestants, right? They only know the party name, they only know the Vajpa BJP symbol or the TMCP symbol or the AIDMK symbol, all those things symbols they know, okay? That only thing they know, okay? So that's why the political party is very important, not only the contestants. So we have the right to know about the contestants, and equally we have the right to know about the political parties, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस जो जानने के बाद हम लोग शायद उसको वोट देने चले जाते हैं, ठीक है? सो ऑल दोस एस्पेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई आर्टिकल 19(1)(a) breach is found. Okay, now coming to the next part, here there is another very interesting violation that was found, that is Finance Act. ठीक है, फिनेंस एक्ट और एक चीज करता है. फिनेंस एक्ट क्या किया है? फिनेंस एक्ट पहले एक कंपनी एक लिमिटेड फंडिंग कर सकता था, 7.5% कैपिंग वाज देयर. नाउ एनी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग और लॉस मेकिंग अनलिमिटेड फंडिंग कर सकता है, पॉलिटिकल फंडिंग मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को. ओके, this becomes very very important for all of you to understand. ठीक है, Article 19(1)(a) का violation that we know. Now next violation is relation to Article 14. Now Article 14 violation is another aspect, and though it is a much easier aspect to know, Article 14 that we know, it is related to equality, right? Equality principle. Now equality principle में हम लोग क्या जानते हैं? There is a case of state of West Bengal versus Anwar Sarkar. Okay, जिसमें टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात किया जाता है. ठीक है, एंड इसके बाद और एक केस आता है रोयप्पा, ई रोयप्पा, जिसमें ये बात किया जाता है कि टेस्ट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस. Now here in this case one fundamental aspect to be understood, जब कैपिंग हटा दिया गया और अनलिमिटेड फंडिंग अलाउ कर दिया गया टू पॉलिटिकल पार्टीज. Now one thing can happen in relation to this is that one fundamental aspect is unlimited funding can lead to many repercussions in election. Many repercussions मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. बहुत सारे प्रॉब्लम मतलब आप खुद ही सोचो, if there is a huge influx of money that is being channelized into our election, that might affect the result of the election. Okay, so as there is a capping of Companies Act that is being changed to unlimited funding in Companies Act, that lead to lot of problem. Okay, so that problem leads to it is an unreasonable and arbitrary in nature के किसी को आप अनलिमिटेड फंडिंग करने की मौका दे दिए इसको करने के लिए. ओके, अनलिमिटेड फंडिंग. Now when it's a unlimited funding that we are talking about, ठीक है, अनलिमिटेड फंडिंग से एक आर्बिट्ररी नेचर
or it is antithesis to equality principle that we are talking about. Okay, and as a result, this particular electoral bond system or the Finance Act, particularly, which Finance Act, it violates the Article 14 as well, because this Finance Act जो 2017 में amendment किया था, that 2017 amendment Companies Act में 182 में जो amendment किया गया था, that amendment led to unlimited funding into the political campaigns. ठीक है, that unlimited funding मतलब arbitrary in nature, जिसमें कोई capping नहीं है, कोई भी छोटा कंपनी, बड़ा कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी, any company that make contributions to it, which basically unreasonable in law. Okay, and that's why it is going to attract the test of arbitrariness, and via which it is going to be आर्टिकल 14 से ये ब्रीच कर रहा है. ठीक है, तो टोटल आपके आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 14 के बीच को बहुत क्रक्स में आई जस्ट पुट इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. बट हैविंग सेड ऑल दोस एस्पेक्ट्स, मैं आप लोगों को कुछ चीज बताना चाहता हूँ. ये जो पार्ट आपके सामने रखा हूँ, ठीक है, ये पार्ट बहुत ही क्रक्स में है. ठीक है, इसमें बहुत सारा एस्पेक्ट है आर्टिकल 19(1)(a) का, उसके बाद आपके फिनेंस एक्ट का. ठीक है, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स दैट आर देयर. ठीक है, आप इसको थोड़ा दोबारा देखो. ठीक है, एंड बात देखने के बाद टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी क्वेरी. ओके, हम लोग इसको और इन डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे. ठीक है, अभी तक के लिए वी आर गोइंग टू एंड इट हियर. आई होप इट एडेड वैल्यू इन योर अंडरस्टैंडिंग. Okay,